Right. So, welcome to this first interaction class of our course presentation and report writing. This is our class. Okay, this is a lab course, everybody knows about that, and we will use this Meet link to join, and we have a class code. Those who have not joined, they will join this class. Then as far as class work is concerned, we'll be using typically 14 weeks for various activities, and weekly we will be interacting for 1 hour. Full class 1 hour interaction. So I have included the topics here, and as we progress we will go on adding the resources also. So let us go to our first point, that is course information. So if you look at the course information, you will find that we'll go to our syllabus. So you will find that the purpose of this particular lab course is to provide the orientation regarding importance of good presentation and report writing skills, and I will explain and illustrate how to prepare for and give our own introduction that will be part of this course. Then we will have explanation, illustrations of the basic concepts and techniques of presentation and report writing, and ultimately we will all collaborate and practice those things we learn to have a better presentation and better report writing skills. So these are what are the objectives of this course. Uh, as far as course outcomes are concerned, the first course outcome is that the student at the end of this course will be able to introduce himself or herself and prepare a video resume. So all of us will prepare a video resume as per the schedule that will be given to you, and then all of us will be able to prepare a presentation and then present it using either PowerPoint or any tool, and typically PowerPoint because most of the people use it, and other online tools if required for preparing diagrams, flow charts, etc. So that all visual tools we can make use of to convey the point that we wish to convey across the audience. Then course outcome 3 is prepare a structured document for technical write-up, and then prepare a technical write-up as per the required structure. So first of all we will prepare a template and then prepare a technical write-up, and then course outcome 4 is preparing a project report in either MS Word or LaTeX. The guidelines will be given in due course of time, with care taken to avoid plagiarism. It means not copying from any resource and properly citing the reference material used. So these things we will be able to do, right. So if you look at the list of the lab activities, first of all, whatever we are doing today is course introduction. Importance of presentation or report writing, I think you will tell me instead of me telling you. The ways in which we will progress, that is activity plan, which is this point number 2 up to point number 13. Then how we are going to assess the activities, and then we will have a survey of our present presentation and report writing skills, right. So we'll start the survey after some time. Then we should be able to introduce in the second week we will understand how to introduce oneself and how to create a video resume. So the guidelines will be given, and accordingly you will start preparing the video resume. Then how to give presentations, tips and tricks. So we will have some industry person also, but before that, before he tells us, we will understand some important things. Then guidelines will go through in the first week. In the fifth week we will have industry person, actual industry person coming from industry, and telling us how they do the presentations in industry. How do they talk with the international people, community, and like that. How do they talk to clients? How do they talk to managers, and like that. Then
as a students, you will be required to do some presentations as far as seminar is concerned. So how do we present a seminar? Then once this is done, after 6th week, we'll start written communication. So how do we write a report? What is a report? Then sample report. I'll show you parts of the report, exactly how it should be. Then we will actually do report writing and preparing the things in MS Word. Then common mistakes and how do we avoid plagiarism and how do we check that in case somebody copies the content from somewhere, how do we know that? Preparing report in MS Word and how to create the structured document. Then we will learn this software called LaTeX, for which is an excellent tool for creating reports, and we will actually do that activity in 12th week, and we'll also learn how do we write a research paper. So these are a technical write-up, general technical write. So these are the various activities. So this is the lab assessment activities, LA1. It will contain primarily resume of your own resume. Then LA2 will be mini project report and technical report writing, and there will be LA3 only, not LA4. So I have in fact written that. So we'll have to remove that LA4. We'll do that, no issue. Yes, I have updated it here. Right. So primarily, I'll go to the. I think I have written that in the lesson plan. So we'll go through the lesson plan quickly. So there is a lesson plan here available, and if you go through the lesson plan, you will understand that there are total 14 weeks of activities, and this is how we will proceed. In this first interaction lecture, we'll have a course introduction which we are doing. Then importance you will tell me part of that, and then there will be how do we have activities, and there will be a survey. So today we'll do this much. Then in the next week I am planning to have industry lecture based on the availability of the person. So we'll listen from them, and then we'll have a presentation and PowerPoint preparation guidelines. So please go through this particular lesson plan, and the dates are also given. Then links to the resources I'll add here. Whatever recording we do, we will have lecture video recording. The activities will be given here. Of course, these all will be available as a part of the classwork. So the whole things I'm trying to put it in a single sheet so that at a glance you will have idea about what is happening in this particular course. And there will be activity submission link, and then there will be a lecture quiz. So for today there is a survey already, so there is no need of any quiz as such. So for every interaction I will take 1 or 2 questions quiz, so that everybody will be able to attempt that. Fine. So this is the lesson plan. Now are we going properly? Are you understanding this? Any query? You can chat on the chat window if you have any query. If you don't have any query, you can type N. Okay, fine. So after few minutes, I will be asking you some questions to get your inputs, so that the whole process of learning will go hand in hand. It's not that I will be dictating something and then you will be following that.
We will have a participative kind of class so that it will be easier for all of us to share our own thoughts and then learn how to improve ourselves. Hmm? Right. Fine. So we went through the syllabus and the lesson plan. I have written, we have a student list available here and Atharv is updating. So if your name is not there in the student list, please inform Atharv so that he can add their names and the data you can update. So that and the same file will be available for all the three courses that uh, we are participating in. That is ECAD lab, ECAD theory, and the PRW. Same file we will use. Is it fine, Atharva? Yes, sir. Okay, fine. So please update this sheet uh, based on who are joining. Hmm? And Okay, sir. in case you need any input, you can connect me. No issue. Fine. So this is about the course information. Then what is the purpose of this particular course? Now what I will do is we will quickly go through the purpose of this course. So first of all, do you think that it is useful, this particular course? Do you think broadly? I'm going to take a survey also later on. Hello? Right. So many of you are saying yes. Now what will be the benefits? Anybody can open the mic, start the mic, unmute and then tell. Why do we need this? Why do we need this course? What will be the overall advantage as far as your career is concerned? What is your opinion? You need to be participative because this is a presentation and report writing. It's a expressive course. This is the course where you need to express yourself. If you do not express yourselves and just listen to whatever I am talking, you will not improve. Yes or no? तो पवन आपको क्या लगता है? What is the benefit? Can you tell at least one benefit? I cannot get a full name of the student here, unfortunately. So that is the issue. But maybe I can pick up somebody from the other list. So can anybody share what is the importance of this course? What is the benefit? Hello? I don't know. This class seems to be very, very slow in response. कोई कुछ बताता ही नहीं. पता नहीं क्या हो रहा है.
अभी 44 लोग हैं, तो 44 लोगों में से एक भी बंदा ऐसा नहीं कि जो इसका बेनिफिट बता सकता है फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू. Hello, sir. May I? Hello. हाँ, yes, yes, anybody can start, no issue. Sir, I guess this particular course will help us to express one particular topic in a better way. Means, for example, if we are given a topic, so it will be great for us to just think about that topic in a very different manners. Like that, yes. And communication will also improve, I guess. Expressing oneself in front of the audience will also improve. Okay, maybe think it differently or whatever you think, na, so that you should be able to convey across the audience, है ना. जो हमको बोलना है, जो हमको एक्चुअली बातें उनसे करनी है, वो उनको समझ में आए. देन यू, वो बातें मैं अभी नहीं बताऊंगा. यू शेयर ऑल दिस थिंग्स टुडे. हेलो. हाँ, यस सर, एवरीबडी विल पार्टिसिपेट. अभी आज सिर्फ पार्टिसिपेशन करना है, जो भी मन में है वो बोल देना है बस, बाकी कुछ नहीं. हाँ, आपके मन में कुछ मत रखो, जो भी बोलना है वो बोलते जाओ, बिकॉज दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. अदरवाइज आप इंट्रोवर्ट ही रहोगे, है ना. आपको बोलना चाहिए, ठीक है. इसमें कोई गलत है या बराबर है ऐसा कुछ हम देखेंगे भी नहीं. रिपीट, वैसे रिपीट बोल रहा है ये भी नहीं बोलेंगे. सो नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है. हाँ, हेलो हाँ, सर. हाँ, प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू. सर, दिस may be used to create to critical questions. Hello, we are not able to listen properly. Can you be rather slow so that we understand? Or somebody else will take the lead. What do you think that this will be beneficial? हम इतना टाइम देते हैं ना, तो उसका कुछ तो बेनिफिट हमको हो. क्या बेनिफिट हो जो हमको लगता है वो. हाँ, Hello, sir. हाँ, यस यस. Presentation skills are important because if we have a knowledge, but if we are unable to express it, then there will be no use of that knowledge. Yes, yes, yes. Do we agree, all of us? यस यस. अभी का ज़माना ही ऐसा है. अभी का ज़माना ऐसा है. यू हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ. अगर आप बताते नहीं तो लोगों को लगता है कि इसको कुछ आता नहीं. ठीक है. हाउ टू यूज़ अप्रोप्रिएट, क्या लिखा है उधर, अप्रोप्रिएटली एंड एफिशिएंटली टू अ क्रिटिकल क्वेश्चन. अच्छा अच्छा. तो प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ रहा है. राइट. एनी अदर पॉइंट दैट यू विश टू टेल कि इसके लिए ये कोर्स शायद मुझे अच्छा लगेगा. बीटेक पास होने तक क्या क्या फ़ायदे होंगे, पास होने के बाद भी हो जाएंगे, बट अभी बाकी के 2 बरस हैं हमारे, उसमें क्या बेनिफिट्स होंगे. You will have many mini projects and then various presentations. तो वहाँ, there you will have a benefit. Then final year project, there your presentation will be great because you have learned how to do that. And then you will get better grades in other courses also if you do good in this course. अगर if you do good in this course, definitely you will get good grades in this particular course, but the benefits will be available in other courses also. Yes or no? तो उसका impact बहुत हो सकता है if you take this positively. Right. तो इसमें काम किसको करना पड़ेगा? Who will be in charge of their own development? Who will be in charge? Who will take the whole thing in their own hands so that they improve? Hello? So, at the end of the course, we will be more confident and we can speak fluently and we can present our thoughts as we want. Yes.
Fantastic. Who was speaking? Sir Gauri Sadve, हाँ, PRN number 71. okay. 70? 71. Okay. Now I'm just writing just so that I remember. Whenever you tell something, na, you tell your name also, so that everybody comes to know the way in which we speak. Huh? If you speak nicely, and if some of your friends says कि आप बहुत अच्छी बोलती है, तो आपको अच्छा लगेगा. Yes or no, Gauri? Yes, sir, definitely. हाँ हाँ. So that we will help each other by encouraging other students. Whenever we encourage other person, obviously will are making the others feel good. At the same time, we will also practice कि बोला कैसे जाता है ना. प्रेज करे भी तो कैसी प्रेज करे, ऐसा नहीं उसको लगना चाहिए कि ये ऐसे ही खाली पीली प्रेज ही करता है. तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वही बात हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं. ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दिस मैटर्स. ऐसा नहीं कि इट्स नॉट दैट ओनली कंपनी में उसका बेनिफिट होता है, बट इवन इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, इफ़ यू नो हाउ टू कन्वे द थिंग्स, you get very good results. Are you getting the point? So for that you need to properly think, look at the resources available, listen to good people, read good books, and then modify or upgrade yourselves by practicing. So this course is deliberately made as a lab course because we want to practice. हमको theory का एग्ज़ाम लिख के कुछ इम्प्रूवमेंट होगा नहीं. Yes or no? तो 2 पॉइंट्स हमने शेयर करे. अभी और कोई पॉइंट्स आपको बताना है? एनी अदर पॉइंट यू वुड लाइक टू शेयर कि इससे मुझे फ़ायदा होगा मेरे लाइफ में? रिपोर्ट राइटिंग का महत्व. एनीबडी हु वुड लाइक टू टेल इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? हम उसको समझेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वट एवर वी फील वी कैन शेयर. Sir, may I? हाँ, yes, yes. Who is speaking? Sir Gauri. हाँ, okay, please repeat. So at the time of we were preparing for means report writing, we will be able to acquire knowledge. We'll be studying on various kinds of things and many more. I think that will be. राइट. ये सही लिख रहा हूँ मैं? Yes. राइट. तो वी विल डू ऑल दिस थिंग्स इन अप्रोप्रिएट डेप्थ. लेकिन आज थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि समझते कि क्या क्या हमको फ़ायदा होने वाला है. तो अच्छा राइटिंग हमको क्यों आना चाहिए? वाई डू वी नीड गुड राइटिंग स्किल्स? कोई शेयरिंग? मैं एक आपको स्टोरी सुना था. स्टोरी अच्छा लगता है आपको? स्टोरी सुनने में? Yes, sir. Yes. हाँ, हर एक को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है. एक बंदा था, एक आदमी था, और उसको बोलने का प्रैक्टिस करने का बहुत मन करता था. तो उसको लगता था कि ही वांटेड टू एक्चुअली स्पीक लॉट, बट उसके लिए कोई लिसनर मिलता नहीं था, सब लोग भाग जाते थे. तो बोला कि क्या करे, ऐसा कोई सिचुएशन होगा जहाँ लोग सुनेंगे.
कहीं नहीं जाएंगे। तो उसने एक आइडिया किया, उसके मन में आया कि ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ लोग भागते नहीं, वो जो भी बोलता है वो सुनते, वो अच्छा हो बुरा हो कैसा हो सिर्फ सुनते रहते। तो जब कोई आदमी मरता है तो उसको शमशान घाट पे लेके जाते हैं ना, तो वहाँ छोटे छोटे भाषण लोग करते हैं, और वहाँ जो बोलता है उसको कोई टोकते नहीं, और जाते भी नहीं इधर, कोई इधर किधर, और कोई पूछता भी नहीं कि आपको कैसे पता चला और कैसे कैसे, कोई भी पूछता नहीं। तो ये बंदा वहाँ जाके कुछ तो प्रैक्टिस करता रहता था। तो जब हम द होल, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. हाँ, तो इसका मतलब है कि हमको करना ही है, तो हम वी कैन फाइंड आउट द वेज। पहले हमको डिसाइड करना है कि करना है ये, यस और नो, एवरीबडी अग्रीज विद दिस। पहले हमको डिसाइड करना है, वी हैव टू डिसाइड कि वी हैव टू डू दिस, without which people will not honor us, people will not give us honor, people will not like listen to us. You will not be able to go up the ladder of your progress. ठीक है, आपके मन में बहुत सारा आइडियाज आता है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू टेल दोज आइडियाज इन प्रॉपर वर्ड्स, देन इट्स काइंड ऑफ ऑल कंफ्यूजन अक्रॉस द ऑडियंस, और फिर बोलेंगे कि कैसे क्या बताता है, इज नॉट एबल टू टेल दोज थिंग्स। तो अभी का ज़माना ही ऐसा है कि जो बोलता है उसकी लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हमको कुछ भी बोलना है, बट वी वॉन्ट टू टॉक सम सेंसिबल थिंग एंड इन अ वे दैट द लिसनर विल अंडरस्टैंड। ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? गुड गुड गुड। So you are now prepared. You by and large everybody like agrees कि ये course useful है. Now in order to make best use of our own time during this course, we have to do certain things. ऐसा नहीं कि आप आए और लेक्चर्स सुन लिया और गए घर सो गए। ऐसा किया तो आएगा क्या आपको? Will you improve? Yes or no? लेक्चर सुना और घर गए सो दिए, तो इससे हम चेंज नहीं होंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? तो पहले हमको समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर नाउ। अभी का हमारा स्टेट क्या है? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे नहीं है, या बहुत कुछ सीखना है। जो भी हमारा परसेप्शन है ना, हमारा खुद का कोई परसेप्शन है कि मुझे इंग्लिश बोलने का इतना इतना स्किल है कंपेयर टू व्हाट इज़ देयर इन इंडस्ट्री, है ना। वो तो हमको पता नहीं इतना कि इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वट एवर वी लिसन on YouTube, the way in which people talk, people present. So if you take a broad benchmark, then where do we stand compared to what usually people present on some good lectures on YouTube? We cannot compare ourselves to EDX, not EDX, but TED Talk और बहुत अच्छा बोलते। Even if you slightly reduce the benchmark, still where do we stand? तो उसका जो आइडिया है ना, वो हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हम कहाँ हैं, हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू डू, सो वो हमको करना है। तो इसलिए हमने एक सर्वे तैयार किया है। तो सब लोग अभी सर्वे में जाएंगे। तो सर्वे है कहाँ? वो सर्वे है हमारे कोर्स में। सो एवरीबडी विल गो टू आवर कोर्स, गो टू द फर्स्ट टॉपिक, course introduction and survey, and then take this Google form survey. Okay, तो ये सर्वे आप ले लीजिएगा। I'll just open this survey and you will find this survey, share about your current level of presentation and report writing skills 2021-22। ठीक है, तो the survey will help me actually to adjust the course delivery or content based on your needs, based on the overall perception of our class. तो सब जाके ये अपना जो सर्वे है ना वो दे दीजिएगा। I will wait for certain time and immediately after you give the survey I will show you the उसका जो समरी आता है ना वो मैं दिखाऊंगा आपको।
ठीक है, तो 5 मिनट तक कुछ एक्टिविटी नहीं है, 5 मिनट आप ले लो, जब भी आपका काम हो जाए तो मुझे बता देना. Right, so we find that 26 people have given the responses. Ask others to give the responses today only. I'll be closing the survey today evening, so ask others to give the responses today only. Atharva will inform those. So all of these students are asking, saying that this course is useful for campus interview. So this is fine. And are you able to see the screen? Yes or no? I think you are able to. Yes. Yes, sir. Okay. So we find that how far you are good at presentation skills. Then most of the students are at the central level. They are not so weak or they are not so excellent, but they wish to improve themselves. So we find the students are in this category 2 and 3 level. So 4 and 5 we want to go to that level. तो उसके लिए हमको efforts करना पड़ेगा. Similar is there for spoken English. The first one is for presentation skills, then spoken English, and written English they are good. Maybe a lot of writing practice is there. तो फिर भी going to 5th level, excellent writing skills is very much needed, because every day you cannot do presentation to everybody, but every day you may need to report the authorities. Yes or no? Do you agree with this? दिन में एक बार हम प्रेजेंटेशन नहीं करते इंडस्ट्री में, बट एवरी डे यू मे नीड टू रिपोर्ट कि आज क्या किया वो रिपोर्ट करो, कल क्या किया, एवरी डे यू रिपोर्ट करो. तो रिपोर्ट हम टाइप करके या मेल भेजते, तो इसमें जो इंग्लिश का लैंग्वेज हो ना, तो ऐसा हो कि नेक्स्ट पर्सन को समझ में आए कि ये क्या क्या किया, या यस गुड गुड गुड, तो ऐसा उसके मन में आना चाहिए. तो उसके लिए रिटन इंग्लिश ज़रूरी है. तो इवन इफ वी फील दैट आवर इंग्लिश इज़ गुड, रिटन इंग्लिश, वी नीड टू, ऑल ऑफ अस नीड टू गो टू लेवल 5. हर एक का इंग्लिश एक्सलेंट हो. यू मे से वाई इंग्लिश, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज वी use when we join industry. It doesn't mean that you should not learn German or you should not learn French or Japanese or even Marathi. So whatever you speak should be understood by the next person. That is the whole idea, right? So उसके जो fundamental things है ना, वो we will understand. Then what mode of teaching will you prefer? Videos and good reports. So we will have videos also, good reports also, I'll show you. Demos by good presenters. So we will call some of us may be good at presentation, right? So we can do some presentations, and then others will listen. Some of our own students who are good at presentation. ये ठीक रहेगा? सब अच्छा नहीं होगा. We understand. Everybody, the presenters, good presenters of our class, present class may not be excellent, but they may be better than others, and others can listen from others can learn from their peer learners. Yes or no? Okay, so we will try to learn from wherever it's possible. Even if we say demo by good presenters, every day we cannot have good live presenter. We may actually see a video or good TED talks, and then we will analyze कि इसका presentation हमको अच्छा क्यों लगा, and that analysis we will have to we will have to understand, and then learn some of the things from that presentation, and then inculcate that, practice that. Then discussion on PR skills, activities for practice के लिए activity तो बहुत करने पड़ेंगे. Practice और report writing ये भी सब लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक करेंगे. I wish to do activities on my own. Everybody, 25% of the people say that ये मैं करना चाहता हूँ, and 25% people are saying that I will study how others do it, and then I will learn from my classmates, which is also a good thing.
but nobody is saying that I will try to copy others' activities, which is a good sign. And do not know about what the course is, 0%. It means everybody knows about the course. So there are some suggestions. We should conduct some group discussions on different current topics, right? We will do this. And I think course should be conducted in an interactive manner. We are trying to do that. But only thing that you need to be responsive. I think there should be activities which should be assigned to all in order to increase the knowledge of the writing skills. For presentation skill, the mini project should be given every week and also everyone to present. Yes, yes. So everybody needs to present. तो हर वीक में हमको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या किया. Then we will be able to understand that. ठीक है. ग्रुप एक्टिविटीज भी होंगे and videos creation भी होगा. By that I'll be able to understand where are we, and you will be having flexibility to present yourself at any time. Otherwise फिर शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, फिर ये लेट आया, वो जल्दी आया, उसने ज़्यादा टाइम लिया. Whenever there is listening to others, then we'll be together. But whenever we want to do the things on our own, then that flexibility will be given in the form of a small video creation, and then I'll be also able to look at that video at my convenient time. ठीक है, ये सही रहेगा. So some of the activities will be group activities. हम साथ साथ में काम करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप में या टोटल क्लास में. And some activities will be given to you independently कि आप जब मन में आए वो करो, लेकिन इस टाइम पे पूरा करो. And then those videos I'll be able to evaluate. ठीक है, ये ठीक रहेगा. We'll have a combination. Yes. You can give some detailed suggestion also, the student who has given this. But anyway, dramas करना चाहता है कोई? Yes, a short time drama. We can have drama, no issue. With every day working on it. हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा. Activity in order to develop good technical writing skills. Right. ठीक है. लाइव और रिकॉर्डेड टाइप ऑफ टास्क्स वो दोनों रहेंगे. ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होंगे. प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशंस होगा. राइटिंग असाइनमेंट्स होंगे, बट दे विल बी इन द सेंस रियल लाइफ का सिनारियो पकड़ के वो राइटिंग असाइनमेंट देंगे. राइटिंग इज़ नॉट जस्ट कॉपिंग फ्रॉम सम जर्नल एंड देन राइट. ऐसा नहीं होगा. थोड़ा करो लेकिन खुद का करो, ऐसा अप्रोच करेंगे हम. 5 to 10 स्टूडेंट्स का हम टीम करेंगे. दैट इज़ लास्ट ईयर भी ऐसा ही किया था हमने. ठीक है. ग्रुप प्रेजेंटेशंस भी थे हमारे. इवन लास्ट टाइम हमने और एक किया था कि पीयर रिव्यू भी किया था. जैसे कि हमारे क्लास में समझो कि 70 स्टूडेंट्स है. So we made group of 5 people. Even that group also we allowed them to choose properly so that they have their own cohesiveness within the team. And then students made their own teams, and then they presented the things, they submitted, and the students themselves viewed the presentations of other people in the same group, and then they evaluated them कि इसका presentation सबसे अच्छा है, इसका presentation थोड़ा सा कम है, इसमें ये changes करने ज़रूरी है वगैरह. इट्स काइंड ऑफ पीयर इवैल्यूएशन, राइट. सो ऐसा नहीं कि आपको खुद को प्रेजेंटेशन अच्छा आना चाहिए, वो तो ठीक है, वो तो आना ही है, लेकिन यू शुड बी एबल टू टेल विच इज़ अ गुड प्रेजेंटेशन एंड विच इज़ नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन. बिकॉज सूनर और लेटर यू विल बी बिकमिंग मैनेजर्स, एंड व्हेन यू बिकम मैनेजर्स यू विल बी इंटरव्यूइंग मेनी पीपल, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा ठीक है, ये अच्छा प्रेजेंटेशन करता है, कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है. दैट यू शुड बी एबल टू evaluate also. Not only that you should be good at doing presentation, but understanding which is good and which is bad presentation, ये आपको आना चाहिए. ठीक है.
ये सही रहेगा पीयर इवैल्यूएशन? ओके गुड, सो विल फॉलो दैट पीयर इवैल्यूएशन. इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा सा काम भी बच जाएगा और आपको चांस मिलेगा इवैल्यूएशन अच्छा करना या ना करना. तो एवरीबडी विल डू प्रॉपर असेसमेंट, कि ऐसा नहीं कि ये मेरा फ्रेंड है, हाँ 5 के 5 दे दो या 10 मार्क दे दो. I will be randomly picking up the assessments done by you, and then if I find that there are some major lacunas, then I'll repeat the whole thing myself. ठीक है? Fine. Yes, we will have tasks assigned to everybody. So a lot of work for me to do before I give the assignments. ठीक है, good. So most of you have expressed that there should be activities and not writing. जर्नल राइटिंग ये इम्पोर्टेंट नहीं, एक्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट. तो आपको भी एक्टिविटीज़ का सजेशन दिया, तो एक्टिविटीज़ आपको करना पड़ेगा. जैसे कि वीडियो रिज्यूमे करने के लिए बोला, तो आपको वीडियो रिज्यूमे जल्दी से जल्दी करके टाइमली सबमिट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि वो अच्छा ही हो. हम यहाँ अच्छे हैं इसलिए नहीं आए हैं, हम यहाँ इम्प्रूव होना चाहते हैं इसलिए आए. एवरीबडी अग्रीज विद दिस? We may be good at this skill, but even if we are not good at this particular skill, the whole course is to improve us, right? So timely आप assignment करो, वो assignment अच्छा या बुरा उसका चिंता मत करो. You will be given chance to improve. जैसे कि निकिता का प्रेजेंटेशन है, उसने किया प्रेजेंटेशन, टाइमली किया, लेकिन उसको इतना इम्प्रूव करने का टाइम नहीं मिला. तो निकिता का पहला वर्जन है ना, वो मैंने देखा और मुझे लगा कि निकिता बहुत फास्ट बोल रही है. तो मैं निकिता को बोलूँगा कि निकिता थोड़ा स्लो बोलना और एक वर्जन आप अपलोड करो. ठीक है निकिता, ये सही रहेगा? Yes, sir. हाँ, सो विल डू दैट वे. द होल आइडिया इज टू इम्प्रूव एंड देन असेस. ये ठीक रहेगा ना? इम्प्रूवमेंट का चांस देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट का चांस साल भर दे दो और बाद में असेसमेंट करो. ऐसा नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो एवरीबडी विल इम्प्रूव और टाइमली असेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको टाइम कम है. दिस सेमेस्टर इज अ शॉर्टर सेमेस्टर, राइट? फाइन. तो अभी हमारा सर्वे भी हो गया, अच्छा हो गया. सो आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर सजेशंस. एंड the only thing is that I'm worried a little bit because the participation is just 36 people, where there are 68 people, 68 odd people in the class. So this is not a very good sign that people want to improve. I don't know what may be the reason. Any reason that you can share कि आज कोई F1 का फाइनल है, ऐसा कुछ है क्या? F1 कौन देखता है? Who watches F1? अच्छा, अवंतिका F1 संडे को रहता है ना अवंतिका? Sir, actually, it depends upon the practice session, qualification level, and the final matches on the Sunday. अच्छा अच्छा, सर्किट कौन सा है? Yeah. अच्छा अच्छा. Circuit concert, yeah. मुझे भी कुछ पता नहीं रहता था, लेकिन मेरे जो 2 लड़के हैं ना, वो यही बातें करते रहते हैं दिन भर. सो वन माय एल्डर सन इज कार डिज़ाइनर, एक्सटीरियर और इंटीरियर, और छोटा वाला वो गेम डिज़ाइनर है. तो दोनों उसमें डूबे रहते. वो F1 बोला तो सब भूल के भाग आते हैं, और बाकी कुछ बोला तो अपने काम में रहते हैं. सो इट हैपेंस. Yes, sir. इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा Actually, पता sir, चल रहा है. Yeah. मुझे ज़्यादा So actually, it's a very interesting sport. We get to मैं learn उनको a lot बहुत of तंग new करता things. हूँ कि क्या रूल्स है, कैसे रूल्स है, ऐसे कैसे टायर होते हैं, सॉफ्ट टायर ले लो, थोड़े हार्ड टायर ले लो, ये चेंज करो, वो चेंज करो. तो दे गो ऑन टेलिंग मी, सर बाबा ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है, इसलिए ये ऐसे करते हैं, इस साल इतने रूल चेंज हो गए वगैरह वगैरह, तो बताते रहते हैं. तो दैट Yes, ऑल्सो sir. कैन बी अ टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन. ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई तो ट्रांजिस्टर हो या कोई तो आईसी हो, ऐसा थोड़ी है. यू कैन हैव दैट टॉपिक ऑल्सो. ठीक है?
तो अवंतिका का F1 अच्छा लगता है, अवंतिका को, शी कैन टेक दैट टॉपिक। निकिता को कुछ अच्छा लगता है, और गौरी को कुछ अच्छा लगता है, गौरव को और कुछ अच्छा लगता है। तो हर एक का जो भी लाइकिंग है ना, उसके ऊपर उसने टॉपिक लेना चाहिए और सही मायने में वो प्रेजेंट करना चाहिए, तो सबको समझ में आना चाहिए। इज इट फाइन? ऐसा कर सकते हैं हम? Yes, sir. हाँ हाँ। सो इससे क्या होगा कि हर एक का थोड़ा जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, और and then everybody will get chance of picking up their own topic. Sometimes we may not get our own topic, तो ऐसे कोई ऐसे एक्टिविटीज़ होंगी जो हमको we may not like it, क्योंकि हम जब काम करते हैं ना, जब गूगल इंटेल में जाते हैं, तो अपने पसंद का काम थोड़ी होता है, हर एक काम अपने पसंद का होता नहीं, क्लाइंट के पसंद का होता है। तो दैट प्रैक्टिस ऑल्सो यू शुड हैव। डू वी एग्री? अपने पसंद का थोड़ा होना चाहिए, नहीं तो हम कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाएंगे। But there will be some places or some situations where we need to study something which is unknown and then present that. ठीक है, वो स्किल भी अपने को आना चाहिए। ये स्किल क्यों चाहिए? Because some of us, those who wish to go for higher studies, आप में से कितने लोग हायर स्टडी को जाना चाहते हैं? अभी जाना चाहते हैं, बाद में जाएंगे ना जाएंगे, मन बदलेगा, वो अलग बात है। How many of you wish to go to higher studies? अच्छा, Mayuri wants to go to. Mayuri, want to ask any question? Hello? Right. So I don't know how many of you would like to go for higher studies, but in case one wants to go for higher studies, तो हायर स्टडीज में जब हम अप्लाई करते हैं ना, यूएस या जर्मनी, जहाँ भी आपको जाना है, वहाँ जब अप्लाई करते हैं, तो व्हाट दे आस्क वेदर यू कैन डू इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आप जाओगे तो हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे। इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड देन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, ये लगता है। देन दे आस्क अबाउट टीम वर्क अच्छा है क्या, क्योंकि वहाँ के जो लड़के होंगे या लड़कियाँ या स्टूडेंट्स होंगे, तो वो हेट्रोजेनियस सोसाइटी से आएगी। somebody may be from Africa, somebody may be from Asia, somebody may be from Japan. So you should be able to work properly, or in the sense you should be able to work in multi-ethnic group. तो वो आपको आना चाहिए। And then you should be able to also work alone, because sometimes you need to work alone, especially research करना है तो। ठीक है। And then maturity level कितना है ये, और एक बात वो पूछते हैं कि विल पावर, आई डोंट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वर्ड, बट आई टेल यू इन वन ऑफ द प्रेजेंटेशंस कि क्या क्या लगता है पीजी के लिए। तो ये सब लगता है, उसमें से थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स हैं वो याद रख के हम करेंगे उस पर काम। ठीक है। नाउ आई वांट टू शो यू वन वीडियो। वुड लाइक टू सी दैट वीडियो। गुड प्रेजेंटेशन एंड बैड प्रेजेंटेशन नाम का एक वीडियो है। हाँ, वो हम छोटा वाला वीडियो है, और वो वीडियो हम देखेंगे, फिर शेयरिंग करेंगे, उसके बाद पॉज लेंगे आज के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी 4:30 तो बज गए। अभी आपको कुछ और एक्टिविटी है? इज़ देयर एनी एक्टिविटी? अगर कोई बाकी का लेक्चर है, कुछ है क्या? इज़ देयर एनी एक्टिविटी? हाँ, ओके। सो विल गो फॉर, आई विल जस्ट अनशेयर द स्क्रीन and then share that window which has the video.
ठीक है, तो उसका ऑडियो भी आपको सुनने को मिलेगा। तो शेयर दी टैब, और टैब कहाँ गया? गुड प्रेजेंटेशन वर्सेस बैड प्रेजेंटेशन। I hope that you are able to see the screen. Yes, sir. हाँ, और ऑडियो आता है कि नहीं बताइए मुझे। Hello everyone. Welcome to Public Speaking. Today's first presenter is Ranjit, and I would ask everyone to give him their full attention. ऑडियो आ रहा है? Yes, sir. Okay. Chantal, could you dim the lights, please? The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the first battles of the Revolution at Lexington and Concord. Thank you, Ranjit. I know it's very hard to give a presentation in front of the entire class. Now, would anyone like to offer Ranjit constructive feedback about his presentation? Any tips for what he might do differently next time? For example, were you all able to hear what Ranjit was saying? Not really. He needs to speak louder and face the audience. Yes. Great suggestion. Anyone else? He was reading from his paper, so it didn't feel like he was really talking to us, you know? Exactly. It's important when you're speaking to look up every sentence or two and make eye contact with someone in the audience. Anything else that Ranjit could do to appear more relaxed and feel more confident? He could smile more. Yes, smiling makes us feel relaxed. Oh, and make sure your phone is off before you speak next time. I do have one more suggestion. To connect with listeners, it's a great idea to use a personal story or experience as an example. Can you try that next time? I think so, yes. Next week, my presentation will be about the causes and effects of stress. We look forward to hearing it. Ranjit is first up again today, and I look forward to his new presentation. Jorge, could you dim the lights, please? Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you.
Great work, Ranjit. I want you all to reflect on how much stronger today's presentation was. Ranjit looked us in the eyes, he spoke clearly, he smiled at us, and he used a personal anecdote to help us feel more connected to him. Well done. Thank you, sir. Right. So, how was the presentation? Could you listen to that properly? Great. So, listen to this presentation. It's available on our Google Classroom. It's available there. And just go through that once more, and that will help you to improve upon yourself. We'll have a introspection, and that will be good. Okay, so will you do that? Okay, great. So everybody will watch this video once again, and you will feel better. And there are many other videos which I will share with you. Some of them are in Marathi, but the way in which the speaker speaks is better. So that way, I think it will be good to listen to good people. I think I'll share with you the name of the person somewhere here. Manoj Ambike. Right, there is a channel. You type on YouTube Manoj Ambike, and you will. He's a trainer actually, and he takes corporate trainings for people to have better confidence, better way of talking. So please watch his videos. He normally speaks in Marathi, but at least you will understand the way in which he speaks. Okay, his videos are very short, maybe hardly 1 or 2 minutes, but he explains some stories. He is author of many books. Whether to buy those books is a different thing, but listening to him will improve. Obviously, you will. Do you listen to TEDx? Yes or no? Have you listened any TEDx? Stand-up comedy सुनते हैं आप? स्टैंड अप कॉमेडी कौन सुनता है? किसका स्टैंड अप कॉमेडी आपको अच्छा लगता है? अभी बहुत सारे लोग हैं ना स्टैंड अप कॉमेडी वाले, बहुत हंसाते हैं. राइट, आई ऑल्सो वॉच सम ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडीज, बट आई वुड लाइक टू नो स्टैंड अप कॉमेडी पीपल और गुड स्टैंड अप वाले आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पसंद शायद आपसे की पसंद की अलग हो सकती है, बट आई वॉन्ट टू नो हु आर द गुड स्टैंड अप वाले. तो वो भी आप बताइएगा बाद में, नेक्स्ट टाइम बता सकते हैं. एंड टेडेक्स तो अच्छा है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है. सो जस्ट लिसन टू टेडेक्स, गो ऑन लिसनिंग, एंड नेक्स्ट टाइम के पहले मैं एक आपको असाइनमेंट दे दूंगा. ठीक है, ये ठीक रहेगा? अभी 4 दिन का छुट्टी है, तो आप एक खुद का वीडियो बनाने का प्रैक्टिस कीजिए. मैं आपको एक I'll just check whether I have that. Just a minute. I'll check whether if I have that PDF with me. Yeah, I have made a list of points which are required for
our own video resume, which I will put those points on our classroom. Okay, तो वो हम करेंगे. So before we meet next time, I will put a small assignment of preparing a video resume. आपका खुद का introduction आप देना है आपको. ठीक है, ये सही रहेगा. It will be an individual activity, but individual करना पड़ेगा पहली बात. ठीक है, बाद में group activity भी करेंगे. Okay. So whenever there is an activity uploaded, I will inform Atharva and he will inform you, all of you. ठीक है, तो और कोई बात आपको शेयर करनी है? Any other thing that you wish to share? अगर शेयर करनी है तो शेयर करिए, अगर नहीं करनी है तो हम यहाँ पॉज लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अभी 1 घंटा हो गया. बट हाउ वाज द सेशन, टुडे सेशन? अच्छा था या 0 to 10 पे आप अगर रेट करना चाहते हो तो कितना करोगे? बोर हो गया या कुछ तो नया सीखने को मिला? You can put a number 0 to 10, आपको जो भी. हेलो, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. अरे 10 out of 10. Who is that? सन्मय बोल रहा है 10 out of 10. Anyway, good. So we try to make a combination of the course information and then उसके बाद क्या किया हमने? बाद में एक सर्वे लिया, है ना, जिससे आपको चांस मिला कि आप एक्सप्रेस करें. बाद में एक छोटा वीडियो देखा जिससे हमको पता चला कि अच्छा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए. तो इतना करके हम आज पॉज लेते. शैल वी टेक अ पॉज? Yes, of course. Okay. Fantastic. So I think जिन लोगों, जो लोग कल नहीं थे, yesterday they were not there, they can continue for some time because I'll be telling them about ECAD. And if there is nobody, then I will just stop this session. ठीक है? So those who were presented yesterday, they can leave this meet now. And thank you, all of you. Thanks. And have a very nice evening. Fine. So I think still there are 10 people, and I will quickly show you about the course. I'll just close this and then कहाँ गया ECAD का course? ECAD lab. ये हो गया हमारा course, and then we'll go to classwork, and then we'll go to experiment 1
बाकी के एक्सपेरिमेंट अभी डालने हैं, वो डालेंगे. And then there is a demo session. Yesterday we had a demo session. और फिर यहाँ एक वीडियो डाला था मैंने. अरे we are processing the video, check back later. क्यों ऐसा हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है. I will have to check that because maybe the video is quite large. But what I'll do is I'll just check why it happened.